So very first topic for today's lecture is derive an expression for electrostatic potential energy. Electrostatic potential energy. So suppose let us consider the electrostatic field due to a source of charge positive Q which is placed at the origin. Suppose this is origin O where the charge positive capital Q is placed, and let a small charge Q naught which is brought from any point A to B, from any point A to B, a charge Q naught is brought. So let R1 and R2 be the distance from point O to A and O to B respectively. So work done is against the electrostatic force while displacing a charge from A to B, Q naught. Now suppose we consider an intermediate position P to Q, and the intermediate distance or displacement of the particle charge is suppose dr. Then work done in displacing the charge Q naught from P to Q will be given as dW is equal to electrostatic force into dr. Now this electrostatic force we are applying is in the opposite direction which opposes that. So here we have to consider a negative sign. So this will be minus QE into dr. Here negative sign appears because the displacement dr is against the electrostatic force. Fe. So this work is stored in the form of energy. Therefore, du will be equal to minus Fe into dr. Now, if we want the total work performed or the total potential energy from A to B, then the total energy delta U will be equal to integration of Fe dr negative from R1 to R2, displaced from R1 to R2. Therefore, delta U will be equal to integration of R1 to R2 minus sign. Now, electrostatic force according to Coulomb's law, electrostatic force is equal to K into charge Q1 into charge Q2 upon R square in the direction of R. So therefore, if we substitute here, this will be K Q into Q naught 1 upon R square dr. Now 1 upon R square integration is
K is constant, Q is constant, Q naught is constant. 1 upon R square's integration is minus 1 upon R. So minus and minus get cancelled. So we have 1 upon R. But the range is from R1 to R2. So substituting the limits, delta U will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q into Q naught 1 upon R2 upper value minus 1 upon R1 lower value. So this is our final answer. So छोटी छोटी बातें, छोटी छोटी बातें. What is 1 joule? 1 joule is the energy stored in moving a charge of 1 coulomb through a potential difference of 1 volt. Through a potential difference of 1 volt. So that is called as 1 joule. The second unit is 1 electron volt. 1 electron volt is the charge, is the change in the kinetic energy of an electron while crossing 2 points maintained at a potential difference of 1 volt. Maintained at a potential difference of 1 volt. So these are the two units for energy, potential energy. We have few relations also. Joule, we know that it is an SI unit of energy. So 1 electron volt is equal to 1.6 into 10 raised to power minus 19 joule. This is actually a charge value of 1 electron. Suppose if I write 1 milli electron volt, so it will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 minus 3. So it becomes minus 22 joules. If I write 1 kilo electron volt, so it will be 1.6 into 10 raised to power minus 19 plus 3. So it becomes minus 16 joules. Suppose if I write 1 mega electron volt, it is 1.6 into 10 raised to power minus 13 joules. Mega means 10 raised to power 6. Kilo means 10 raised to power 3. Milli means 10 raised to power minus 3. We are discussion of the concept of electric potential. So electric potential at any point in an electric field
is defined as work done in bringing a unit charge from infinity to that given point against the direction of electric field intensity. So electric potential at any point in an electric field is defined as the work done in bringing a unit charge. Unit charge means charge value is 1 from an infinity to that point against the direction of electric field. As we know that if we bring a charge from infinity towards a charge, another charge, so the first charge will oppose the second charge. So if we talk about the potential of a system, so the energy will be equal to K, that means 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R, or you can say as 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R into Q2. Now 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 upon R, this physical quantity is called the electric potential, which is denoted by V. That means the energy is equal to V into Q, or you can say that V is equal to U upon Q. For representation, sometimes we write here as R, which represents the distance displacement of the particle from infinity to that point, or the distance between the two charges. If we have a charge Q1 here and we are bringing another charge from infinity and we brought here, then the distance between the two charges R. So sometimes it is written as R. So that's why we can write this also as R with respect to R. So here you can see that VR depends upon the charge, which is located, and one thing it depends upon the charge, and the other thing it depends upon R value also. So it depends upon the charge and distance R. Now if we talk about electrostatic potential difference, if we talk about potential difference, the potential difference between two charges, suppose Q1 and Q2 are two charges, B, V1 and V2 respectively. So we have potential difference as V2 minus V1 will be equal to U2 upon Q minus U1 upon Q. So that will be equal to U2 minus U1 upon Q, and U2 minus U1 is change in the energy, which is nothing but work done. So this is dW upon Q. So work per unit charge is nothing but potential difference. So the definition of potential difference is work
per unit charge value. Relation between electric field and electric potential. Now, if we consider an electric field produced by a charge Q, so there is a charge Q which is kept at point O. So this is a charge Q which is kept at point O, and a unit positive charge positive Q naught is present in the vicinity and is moved towards the charge. It is moved towards the charge. Suppose यहाँ point N से M पे displacement आया है and the displacement is short displacement dr. तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो आउटसाइड जाएगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, तो मैंने बताया था पॉजिटिव चार्ज बाहर की तरफ जाता है. Now, if this charge is displaced from N to M at a short interval of dx, so the work done against the electrostatic force dW will be equal to F dot dx. A W, समझा का W? So which is equal to negative of F into dx. Negative F into dx. So again the negative sign indicates that the displacement of charge is in dr लिखो, dx लिखो, dr इधर क्या लिखो, dx लिखा तो इसको dx कर देते, दो बार dx लिखा. So charge is in opposite direction of E. Opposite direction of E. Now, this can also be written as negative E into dx. Electric field intensity and force has the same direction. So this is E into dx. So therefore, the work done, we know that it is potential into charge, or potential is equal to work per unit charge. Here the charge is Q naught. So therefore, you can say that dW is equal to dV into Q naught. As we know that Q naught is a unit charge, so its magnitude value is 1. So therefore, dW is equal to dV. So when we compare these two, we know that dV is equal to dW and dW is equal to minus E dx. Therefore, dV upon dx is equal to minus E, or you can say that E is equal to minus of dV by dx. So electric field intensity is potential per unit displacement. In simple words, it is also called as E is equal to V upon L. When we consider a conductor, a wire of length L, this will be used in current electricity in the next chapter, and the unit will be equal to potential per unit length. So potential per unit length is also, इसकी unit आएगी volt per meter. It is also called as potential gradient. Also called as
potential gradient is also called as potential gradient. This is very important statement. So electric field intensity is also called as potential gradient. So zero potential के बारे में डिस्कस कर. So when we talk about zero potential, so आप ध्यान से समझो कि जो नेचर ऑफ द पोटेंशियल है, अगर हम माने कि वो जीरो है तो ये एक आर्बिट्ररी स्टेटमेंट आ गया. इसका मतलब ये नहीं है कि एक्चुअल वैल्यू उसकी जीरो है. दैट मीन्स द नेचर ऑफ द पोटेंशियल is such that its 0 point is arbitrary. This does not mean that the choice of 0 point is insignificant. Does not mean, ना. मतलब कहने का मतलब ये कि अगर हम बात कर रहे हैं कि once the 0 point of a potential is set, मतलब एक पोटेंशियल का 0 point सेट कर दिया गया, इसका मतलब ये नहीं कि उसकी वैल्यू जीरो है. Then every potential is measured with respect to that point. मतलब जैसे कि ये स्पेस है, अब ये स्पेस में मैंने कोई एक पॉइंट लिया, अब मुझे बताना है कि इस पॉइंट ए की लोकेशन क्या है, एक्स और वाई. तो मुझे इस लोकेशन बताने के लिए आप बताएंगे ना ये ए की पॉइंट आप किसके हिसाब से मान रहे हो. तो हम स्पेस में कोई एक पॉइंट कंसिडर करते हैं जिसे हम बोलते हैं ओरिजिन. सो हम इस पॉइंट को ओरिजिन ओ मानते हैं जिसकी पॉइंट वैल्यू जो है वो 0,0 है. क्या ये वैल्यू इसकी 0,0 है कि हमने इसको कंसिडर किया? तो ये हमारी आर्बिट्ररी वैल्यू है 0,0. अब जो हमें इसकी एक्स और वाई की वैल्यू मिलेगी, जो कोऑर्डिनेट्स हैं ऑफ ए, दैट इज एक्स एंड वाई, आर विथ रिस्पेक्ट टू ओ, दैट इज 0,0. तो इसका मतलब इसके हिसाब से उसकी वैल्यू. कल अगर ये चेंज हो जाएगा, आपने पढ़ा हुआ लोकस, एक्सेस रिमेन्स पैरेलल एंड ओरिजिन इज शिफ्टेड. तो अगर ओरिजिन शिफ्ट कर दोगे तो पॉइंट वैल्यू भी चेंज हो जाती है ना. सो व्हेनेवर वी डिस्कस समथिंग वी हैव अ रेफरेंस वैल्यू. तो उस रेफरेंस वैल्यू को हम जीरो पोटेंशियल 0 पॉइंट मानते हैं. उसी तरीके से स्पेस में हमारे पास बहुत सारे चार्ज हैं. ये चार्ज है सपोज Q1, एक चार्ज है Q2, एक चार्ज है Q3. अब हमने इस सिस्टम की स्टडी करनी है. सो हमने एक चार्ज मान लिया Q विच इज एट ओरिजिन 0 पे. सो ये जो Q है इसकी पॉइंट वैल्यू 0 बन गई. दैट डज नॉट मीन कि ये 0 है. इसका मतलब ये है कि इसका पोटेंशियल 0 क्योंकि इसकी R की वैल्यू 0. तो यहाँ पे स्टोरी जो है विथ रिस्पेक्ट टू Q गिनी गई है जिसे हम 0 पॉइंट मानते हैं. So what can we say? So we can say that if we set once the 0 point of the potential is set, then every potential is measured with respect to that reference. So that becomes reference value. Hence, zero potential is set
conventionally, conveniently. Zero potential is set conveniently. On the contrary, in the case of a point charge, the location collection of the charges, the 0 point is set at infinity. When we consider a system of the charge, suppose we have charges Q1, Q2, Q3, Q4, and we are discussing Q1, Q2, Q3, Q4. So if we consider this as a system of charge, so where is the zero? Zero is at infinity. So zero is at infinity, is considered at बहुत दूर, मतलब इनको जीरो से कोई लेना देना नहीं है, आपस से स्टडी चल रही है, मतलब इनके बीच का डिस्टेंस मुझे कितना है, सपोज ए, इसके बीच का डिस्टेंस क्या है बी, मतलब आपस में एक दूसरे के साथ, उसे जीरो पोटेंशियल से कोई लेना देना नहीं होता. When we talk about electricity, बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, बार बार पढ़ाना नहीं पड़ेगा, इसलिए साथ साथ में बोल रहा हूँ. So when we talk about electric circuit, then earth is considered as zero potential. Usually, earth is considered as zero potential. So in the above statements, we discussed about 0 point, which is arbitrary. We discussed it does not mean that the choice of the 0 point is significant. It is fixed. It is not fixed. It varies. And once we set the zero potential point, then the every potential measured will be with respect to that reference only. Hence the zero potential is set conveniently. जैसे हमें जरूरत है उसके हिसाब से हम जीरो को मान लेते. So when we talk about a system of the charge, when we talk about system of charge, then the zero potential is set at infinity. So these are 5 points which we have discussed in zero potential. So question number 9. 125 small liquid drops each carries a charge of 0.5 microcoulombs and each of diameter 0.1 meter from a big drop. Calculate the potential at the surface of the biggest drop. Surface of the biggest drop. So given charge is 0.5 microcoulombs, which we can write as 0.5 into 10 raised to power minus 6 coulombs. Distance is 0.05 meter, R value, radius, and n is equal to 125. N is number of droplets. Radius is half of the diameter. As the question gives diameter values as 0.1 meter, so the radius value will become 0.05 meter. Formula, we have to find the potential, which is equal to charge upon 4 pi epsilon naught capital R. As a single drop,
is formed by coalescing the big drop will have the charge value as Q is equal to 125 small q. So 125 times of small q is 0.5 into 10 raised to power minus 6 coulombs. That will be nothing but 62.5 into 10 raised to power minus 6 coulomb. Now, when 125 small drops combines to form a big drop, then the radius of the big drop, which will be equal to the cube root of n times of r, this we have already used in surface tension. So the radius will be equal to cube root of 125 times of small r value, which is equal to 0.05 meter. So this is 5 is at 25. So we can write as 0.25 meter. So the capital R value is this much. So according to the formula, the calculation of V will be equal to 1 upon 4 pi epsilon naught. We all know that the value is 9 into 10 raised to power 9 into capital Q. The capital Q value we have manipulated is 62.5 into 10 raised to power minus 6 upon capital R value is 0.25. So rest is the basic calculation. This is 9 into 625 upon 25 into 10 raised to power 9. If we remove the decimal, this will become minus 7. Remove decimals to minus 2, ऊपर जाएगा तो plus 2 आ जाएगा. So 25 ones are 25, 25, 25 are. So 25 into 9 is nothing but 225 into 10 raised to power 9 तो 11, 11 में से 7 गया 4. So this can be written as 2.25 into 10 raised to power 6. Potential value is volt. So the answer is 2.25 into 10 raised to power 6 volts. Derivation of an expression for electric potential due to a point charge. Now same story, if we consider a charge positive Q at a point origin at a distance of r, there is another point A. Now let a positive charge, unit positive charge, be brought from the infinity to point A. From infinity, it is brought towards point A. So what we will consider? We will consider an intermediate position. From n to n, we are bringing a point, unit positive charge, Q naught, from infinity to point A. So intermediate position आ गया. यहाँ से यहाँ तक का जो distance है, उसे मैंने dx मान लिया. और ये जो position है जहाँ से वो लाया गया, कहीं पे unknown value है तो इसलिए उसे x मान लिया गया. So the magnitude of electrostatic force is k times of q upon r square. Here r is nothing but x, so it becomes x square. We are talking about OM with respect to x. So this is our first value. So work done will be equal to dW is equal to F into dx. Negative sign. Negative sign indicate that the displacement is in opposite direction of the force. So therefore the total work done
W will be equal to integration of dw, where the charge is brought from infinity to the point A, which is nothing but R. So it is from infinity to R. So that can be represented as from infinity to R. Work is nothing but minus of F into dx. Now we have the formula for F is nothing but K times of Q upon X square. So from 1, we can say that W is equal to integration of from infinity to R. This is equal to minus K times of Q upon X square into dx. So we know that minus K and Q are constant from infinity to R. So the value is 1 upon X square dx. Now the integration value of 1 upon X square is minus 1 upon X. So therefore the W value will be equal to minus K into Q. This is minus 1 upon X. Integration value from infinity to R. First we have to substitute the upper value, or you can consider माइनस साइन हटा के आप रेंज ऊपर नीचे कर सकते हैं, पर यहाँ दो माइनस है तो माइनस एंड माइनस बिकम्स प्लस. सो इट इज के क्यू 1 अपॉन एक्स रेंज फ्रॉम इंफिनिटी टू आर. एक बार अपर वैल्यू डालेंगे, एक बार लोअर वैल्यू डालेंगे. सो वी कैन राइट एस वर्क इज इक्वल टू के इंटू क्यू 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी. हम बचपन से पढ़ रहे हैं, 1955 से हम जानते हैं कि 1 अपॉन इंफिनिटी की वैल्यू होती है बड़ा वाला 0. So if this is 0, then the work value will become k into q upon r. आपको चाहिए आप k की वैल्यू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट डाल सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है. सीसीबी, छोटी छोटी बातें. सीसीबी करेंगे हम, छोटी छोटी बातें. पहली बात, a positive charge particle will produce positive electric potential. समझे? And negative charge produces negative electric potential. पॉजिटिव वाला पॉजिटिव काम करेगा, नेगेटिव वाला नेगेटिव काम. सेकंड वैल्यू, अगर हम आर की वैल्यू इंफिनिटी बोल रहे हैं, सो वी की वैल्यू होती है क्यू अपॉन आर. सो क्यू अपॉन इंफिनिटी, सो 1 अपॉन इंफिनिटी बिकम 0, इसलिए पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. बहुत पॉइंट टू पॉइंट कट टू कट बता रहा हूं आपको. छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बड़े बड़े काम है इसके. इसका मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट इंफिनिटी इज 0. ऐसे भी लिख सकते हैं हम नीचे, ऐसे इंफिनिटी. For any point at a distance r from the point charge q, the value of potential is same and is independent of the direction of r. मतलब यहाँ पे हमारे पास एक चार्ज है q एट o और ये हमारा दूसरा चार्ज है q. अब ये चार्ज अंदर आ रहा है या बाहर आ रहा है, इस पोजीशन पे इसका जो पोटेंशियल होगा वो फिक्स होगा. आप अंदर लाओ या बाहर लाओ, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द आर. मतलब आर बढ़ रहा है घट रहा है, कोई लेना देना नहीं है. तो इसका मतलब एक चीज क्लियर है कि इसके एंटायर स्फेरिकल सेक्शन के अंदर, इसके गॉसियन स्फीयर के ऊपर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसका पोटेंशियल सेम है. So at any point at a distance r from the point charge q, the value of v will be same and it is independent of the r. उसको r से कोई लेना देना नहीं होगा डायरेक्शन वाइज. इसीलिए आप बोल सकते हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिंगल charge is spherically symmetric.
जो चीज अकेली, बेचारा अकेला छड़ा है, अकेला बैठा हुआ है, अभी उसके आगे में कोई चार्ज आए, नीचे पीछे आए, इधर आए उधर आए, कहीं पे भी उसके घेरे में कोई भी चार्ज आएगा, वो किसी को छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि वो अकेला है। इसलिए एक पॉइंट चार्ज को, जो उसका स्फीयर होता है, उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, वो एक 3 डायमेंशनल स्फीयर आता है, जिसे हम स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस भी कहते हैं। और इसके स्फीयर पे कहीं पे भी कोई भी चार्ज आ जाए, काला हो, गोरा हो, मीठा हो, खट्टा हो, लंबा हो, छोटा हो, चौड़ा हो, मोटा हो, अंदर का हो, बाहर का हो, प्लस हो, माइनस हो, कहीं पे भी हो, सेम पोटेंशियल दिखाएगा, सेम पोटेंशियल। So graphical variation of electric field and electric potential with respect to R. With respect to R. So when we draw a graph, here it is suppose electric potential, and here it is R, and this is electric potential. So electric potential, the graph will be represented as we have a relation of electric potential inversely proportional to 1 upon R. V is proportional to 1 upon R. So the graph is like this. And when we talk about electric field, that is E, then the graph is represented as, थोड़ा steep ऐसा होता है, क्योंकि E is proportional to 1 upon R square. Here V is proportional to 1 upon R. So ये ग्राफ आ रहा है due to a single charge at a distance R, force is proportional to 1 upon R square. So therefore electric field intensity is also proportional to 1 upon R square. But electric potential is proportional to 1 upon R. So derive an expression for electric potential V due to an electric dipole. We have to discuss two cases. One is at axial point and the other one is at equatorial point. So if we consider an electric dipole, means at point A we have a charge, positive charge Q, and at point B we have a negative charge minus Q, and the distance between the two charges is 2L. So if I draw an axial line between A and B, the mid value I consider as O,
Therefore, this length will be equal to L, and O to B will be also equal to L. Now let C be the any point near the dipole at a distance R. C be the any point near the dipole at a distance R from O. So OC will be equal to R. And this makes an angle theta from AB. Now the charge positive Q is at a distance of R1 from C, and point B is at a distance of R2 from C. This is point A, this is point B, and this is point C. Now, potential at C due to charge negative Q at B be V2. So therefore V2 की वैल्यू आएगी K into Q upon R1, sorry R2, and potential at C due to charge positive Q at A be V1, which is equal to K times of Q upon R1. Now at B it is negative Q, so it will be negative. This is positive, so it will be positive. 1, 2. So the potential at C due to the dipoles is given by V at C will be equal to V1 plus V2. जब दोनों को ऐड करेंगे बेटा, सो K कॉमन है, Q कॉमन है, यहां बचेगा 1 अपॉन R1, यहां आएगा -1 अपॉन R2 फ्रॉम 1 and 2. So by the geometry, this is L, this is also L. If I draw a perpendicular, so theta का ये opposite side हो जाएगा. So that will be L sin theta component. And if I draw perpendicular here, so बेटा suppose ये O से P point है और ये O से Q point है, तो हमारा AP जो है वो L sin theta हो गया और BQ जो है वो भी L sin theta हो जाएगा by using trigonometry. Now, by using the geometry of a triangle, शायद आपको पता हो, there is a formula which I am applying here. ध्यान से देखिए, आपको शायद समझ में आए. R1 square is equal to R square plus L square minus 2 times of RL cos theta. Cosine rule in triangles. हमारे पास एक ट्राइंगल है, हमारे पास एक ट्राइंगल है, उसके नाम है ए बी और सी. इसका ऑपोजिट साइड है छोटा ए, छोटा सी, छोटा बी. सो कोसाइन रूल was cos A is equal to
बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 BC। याद आया कुछ? कोसाइन रूल। तो उसके हिसाब से ये ऊपर जाएगा, तो 2 BC कॉस ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। याद आया? अब ये ए स्क्वायर यहाँ आएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 BC कॉस ए। ये याद आया? अरे बोलो हाँ या ना। अब हमारा जो डायग्राम था, ये बी है, ये ए है, यहाँ पॉजिटिव क्यू है, यहाँ नेगेटिव क्यू है, ये सी है, ये सेंटर पॉइंट है ओ, यहां से हमने 90 ड्रॉ किया, ये एंगल है थीटा। याद आया? अब बेटा यहां से लेके यहां तक का लेंथ है आर, यहां से लेके यहां तक का लेंथ है R1, और ये लेंथ है L। सो बेटा ए का ऑपोजिट एंगल ए था, तो ये थीटा का ऑपोजिट साइड R1 हुआ ना। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, दैट मीन्स आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2 BC, मतलब RL कॉस ऑफ एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो आर और एल के बीच का एंगल क्या हो गया? थीटा। अब समझ में आया कोसाइन रूल? सो यहाँ पे है पॉइंट ए, ये पॉइंट था बी, ये पॉइंट था सी, ये डिस्टेंस है R1, ये डिस्टेंस है R2, ये सेंटर पॉइंट था ओ, ये एंगल है थीटा, तो ये एंगल भी है थीटा। यहाँ से 90, यहाँ से 90। अब बेटा स्टडी करो, ध्यान से समझो, स्टोरी बड़ी ट्विस्टेड है। हमने पढ़ा R1 स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL कॉस थीटा। बट अगर मैं इस ट्रायंगल को कंसीडर करूंगा, ओ ए सी की जगह पे ओ ए सी की जगह पे अगर मैं, ये पॉइंट है पी, ये पॉइंट है क्यू, और ये बड़ा ट्रायंगल लूंगा, बेटा इसमें लेंथ बढ़ रहा है। सो द रिलेशन विल बी इक्वल टू R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, माइनस की जगह पे आएगा प्लस 2RL कॉस थीटा, क्योंकि हमारा एक साइड R प्लस एल कॉस थीटा है, R प्लस एल कॉस थीटा है, इसीलिए फॉर्मूला बढ़ गया। अब बेटा अगर आप ठंडे दिमाग से दोनों को स्टडी करो, तो आप बोल सकते हो, अगर मैं डिवाइड बाय आर स्क्वायर कर दूं, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें, तो आर स्क्वायर अगर कॉमन ले लूं, तो R1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर इंटू 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर माइनस 2L अपॉन आर कॉस थीटा। और इसमें भी अगर आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, तो R2 स्क्वायर विल बी इक्वल टू आर स्क्वायर 1 प्लस एल स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2L अपॉन आर कॉस थीटा। सिर्फ एक माइनस है, एक प्लस है, आर स्क्वायर कॉमन ले लिया बेटा मैंने। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय आर स्क्वायर किया, कॉमन सेंस है। अब बेटा एक बात याद रखना, ये सी बहुत दूर है एज कंपेयर टू ए बी का लेंथ। तो हमारा एक चीज क्लियर है कि ये जो आर वैल्यू है, इट इज वेरी 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 ग्रेटर देन 2L। ये दोनों बहुत नजदीक है, जो चार्जेस बहुत नजदीक है एज कंपेयर टू पॉइंट सी। सो आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन 2L। so you can say that if r is very much greater, तो आप इसके अंदर L अपॉन R को निग्लिजिबल मान सकते हो, क्योंकि L इज कंसिडर्ड एज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0।
So L upon R is approximately equal to 0 is very small. So हम अगर ये बहुत छोटा है तो बेटा उसका स्क्वायर तो और छोटा आएगा. So it will be considered as 0. Since L upon R is very, very, very small, then L upon R square will be equal to 0. It will be more small. So इसलिए L square upon R square को 0 मानेंगे, यानी negligible. So you can say that R1 square will be equal to R square into 1 plus 0. उसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा. Minus 2L upon R cos theta, and R2 square will be equal to R square into 1 plus 2 times of L upon R cos theta. कोई डाउट बेटा? सो अगर मैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड्स करूंगा, सो सिंपल शब्दों में मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ R1 will be equal to R into 1 minus 2L upon R cos theta raised to half, and R2 also equal to R into 1 plus 2L upon R cos theta raised to half. So the total potential V will be equal to V1 plus V2. So total V potential will be equal to V1 plus V2. So therefore V will be equal to V1 और V2 में K और Q कॉमन आ गया, बाकी जो बचेगा वो आएगा 1 अपॉन R इंटू 1 माइनस 2L cos theta upon R the whole raised to half. क्योंकि अगर R की वैल्यू हाफ है तो 1 अपॉन R की वैल्यू नेगेटिव आएगी, माइनस 1 अपॉन R ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस 2L cos theta upon R the whole raised. So V की वैल्यू आ जाएगी K इंटू Q. अब बेटा यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो वैल्यू है इसे सॉल्व करने के लिए बाइनोमियल इंडक्शन का एक्सप्रेशन यूज होगा, और बाइनोमियल इंडक्शन का एक्सप्रेशन क्या बोलता है? 1 प्लस एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स when x is very 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 small than 1 and contains a term up to the first order of 1 upon R only. मैं आपको ठंडे दिमाग से समझाता हूँ ये डायलॉग. अगर ये पावर 1 से कम है तो ये पावर सीधा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगी, खत्म. सो द वैल्यू विल कम के क्यू 1 अपॉन आर, दोनों में से कॉमन है इसलिए बाहर आर लिख दिया, ये नीचे आ जाएगा. सो इट विल बी 1 माइनस 2L cos थीटा अपॉन आर, और ये नीचे आ जाएगा. सो यहाँ आएगा 2 और ये माइनस का बन जाएगा प्लस. नेगेटिव वैल्यू 1 2L cos थीटा अपॉन आर, ये फिर से नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा माइनस, और यहाँ आएगा 2. ये हमने फंडा यूज किया, कुछ नहीं है, पावर नीचे आ जाता. अब बेटा 2 और 2 कैंसिल, सो वी है पोटेंशियल वैल्यू इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर. बेटा ये आएगा 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर माइनस 1 प्लस एल कॉस थीटा अपॉन आर. कुछ कैंसिल हो रहा है, 1 और 1 कैंसिल हो रहा है, therefore v is equal to k q upon r
So 1 plus 1 becomes 12 cos theta upon r. So therefore V is equal to K2QL cos theta upon r square. So here 2QL is represented as P, which is called as dielectric dipole moment. सिंपल शब्दों में डायपोल मूवमेंट आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा. मैं वापस बता देता हूं. अगर एक पॉइंट P है, एक पॉइंट Q है, इसमें चार्ज है Q, इसमें चार्ज है Q, दोनों के बीच का डिस्टेंस है 2L. तो डायपोल मूवमेंट P is equal to Q into 2L. So that is 2QL is called as dipole moment. P symbol है उसका, dipole moment. So therefore V will be equal to K. इसकी जगह पे आएगा P cos theta upon R square. आपको पसंद नहीं है, आप K की जगह पे डाल सकते हैं 1/4 pi epsilon naught P cos theta upon R square. वैल्यू 0, क्योंकि हमको पहले ही बताया cos theta करना क्या. Cos theta is equal to 0. If cos theta is equal to 0, then the potential cos theta is 0. That means we have A, we have B, where it is positive charge and this is negative charge. And if theta is 0, that means the point C lies on the axis only. कहीं तो लाइन के ऊपर ही है. So if it is lies on the axis only, मतलब यहाँ पे ये दूर नहीं है, इसके ऊपर आ गया, तभी तो थीटा 0 होगा. So हमारा ये आएगा V on actual. So that will be equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square cos 0. अब बेटा एंगल जो है वो 0 भी हो सकता है, वो 180 भी हो सकता है. 0 या 180, पॉजिटिव एंगल और नेगेटिव एंगल, अंदर या बाहर. सो cos 0 की वैल्यू 1 है और cos 180 की वैल्यू -1 है. So that's why we have a formula for 1/4 pi epsilon naught P upon R square into plus or -1. But whereas if we say theta is equal to 90 degree, 90 मतलब pi by 2, so that means we are talking about हमारा ये A है, ये हमारा B है, A B है और ये सेंटर O है, C यहाँ पे है और ये एंगल जो थीटा है वो 90 डिग्री. And we all know that cos 90 is what? 0. Therefore ये जो लाइन होती है जो परपेंडिकुलर टू द एक्सेस होती है और परपेंडिकुलर होती है उसे इक्वेटर कहते हैं. Therefore potential at equator will be equal to 1/4 pi epsilon naught P upon R square into 0, and anything multiplied by 0 becomes 0. Therefore P at equator is 0. We have P at axis is maximum and P at equator is